होटल मैनेजमेंट ज्वाइन किया मैंने, IHM ज्वाइन किया, तो उसके बाद वन ऑफ द रीज़न वाज टू ज्वाइन इज़ टू बिकॉज देयर वाज अ अपॉर्चुनिटी टू डू इंटर्नशिप अब्रॉड. So one must always have use this opportunity when they are doing hotel management. US हो, यूरोप हो या कोई भी कंट्री हो, और UK रहता है, कनाडा रहता है, तो अपने को जब अपॉर्चुनिटी है तो उसका इस्तेमाल करना चाहिए. तो वन ऑफ द रीज़न टू जॉइन होटल मैनेजमेंट वाज टू एक्सप्लोर अब्रॉड. सो आई जॉइन होटल मैनेजमेंट 2013. 2014 में मैं पहले US गया 6 मंथ्स के लिए. वहाँ मैंने इंटर्नशिप की एट वेल रिजॉर्ट. फूड एंड बेवरेज में मैंने इंटर्नशिप की फॉर 6 मंथ्स. इट वाज अ वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस. हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल हॉस्पिटैलिटी अनप्लग. मेरा नाम राजू शर्मा है और मैं फाउंडर हूँ हॉस्पिटैलिटी अनप्लग का. आज जो हमारे गेस्ट है वो बहुत ही खास है. इनको मैं इनके कॉलेज डेज से जानता हूँ. एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं, एक बहुत ही अच्छे होटेलियर हैं और एक बहुत ही अच्छे एंटरप्रेन्योर भी हैं. जी, अगर आप कोलकाता में रहते हैं तो आपने सोशल हाइडआउट और लालू की लिट्टी के बारे में ज़रूर सुना होगा. ये इनके ओनर हैं. जी बिल्कुल, मैं बात कर रहा हूँ मोहम्मद खालिक के बारे में. खालिक आज यहाँ पे मौजूद है. चलिए जानते हैं आज इनसे इनकी जर्नी. Khaleeq, welcome to channel Hospitality Unplugged. Thank you for having me. I'm very grateful to be here. Thank you so much for inviting me to this show. थैंक यू सो मच. और Khaleeq, मैं तो आपको आपके कॉलेज डेज से ही जानता हूँ, लेकिन हमारे व्यूअर्स को ज़रूर सुनने में इंटरेस्ट होगा आपकी जर्नी के बारे में कि आपने ये होटल मैनेजमेंट किया, आपका क्या प्लान था ओवरऑल, अगर आप उसको बताएं. बेसिकली देखो, मेरा कोई प्लान ही नहीं था होटल मैनेजमेंट का. जब मैं छोटा था, वी नेवर थॉट ऑफ कमिंग टू द हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री. सिर्फ सुनते थे डॉक्टर बनना है तो इंजीनियर बनना है या टीचर बनना है, बट किसी से ये नहीं सुना जो होटल मैनेजमेंट कर लो बने. तो आहिस्ता आहिस्ता जो जैसे जैसे अपना लाइफ चलता रहा, स्टडीज़ बढ़ता रहा, देन आई वाज डूइंग BCom. बेसिकली आई वाज डूइंग बैचलर्स ऑफ कॉमर्स. देन आई मेट अ फ्रेंड, तो उसने मुझे बताया होटल मैनेजमेंट के बारे में, करियर के बारे में. सो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड होटल मैनेजमेंट जर्नी. आई जॉइंड IHM and that's where my journey started. अदरवाइज चाइल्डहुड में तो अपने को क्रिकेटर बनने का शौक था बहुत. होटल मैनेजमेंट का तो कोई वही था ही नहीं. बहुत ही अच्छी बात है. और आपका कोई प्लान नहीं था होटल मैनेजमेंट करने का, पर आज देखिए आप कहाँ पे हैं. और मुझे पता है क्योंकि मैं आपको बहुत दिनों से जानता हूँ. आप US गए थे अपने इंटर्नशिप के लिए, तो आप जो है वो एक्सपीरियंस थोड़ा शेयर कीजिए. राइट. वेल, होटल मैनेजमेंट ज्वाइन किया मैंने, IHM ज्वाइन किया, तो उसके बाद one of the reason was to join is to because there was a opportunity to do internship abroad. So one must always have use this opportunity when they are doing hotel management. क्योंकि आप जब भी होटल मैनेजमेंट करिएगा तो आपको एक इंटर्नशिप का अपॉर्चुनिटी मिलता ही है अब्रॉड का. US हो, यूरोप हो या कोई भी कंट्री हो, और UK रहता है, कनाडा रहता है, तो अपने को जब अपॉर्चुनिटी है तो उसका इस्तेमाल करना चाहिए. तो वन ऑफ द रीज़न टू जॉइन होटल मैनेजमेंट वाज टू एक्सप्लोर अब्रॉड. सो आई जॉइन होटल मैनेजमेंट 2013. 2014 में मैं पहले US गया 6 मंथ्स के लिए. वहाँ मैंने इंटर्नशिप की एट वेल रिजॉर्ट. फूड एंड बेवरेज में मैंने इंटर्नशिप की फॉर 6 मंथ्स. इट वाज अ वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस. स्पेशली आपका पूरा एक नया दुनिया रहता है, समझे, डिफरेंट लोग रहते हैं, आपका कम्युनिकेशन एकदम अलग डिफरेंट रहता है, आप नए लोगों से मिलिएगा. सिर्फ आप US नहीं, US इज़ अ लैंड वेयर बेसिकली यू विल सी पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड. वो कहते हैं ना, जैसे इंडिया कहते हैं इट्स अ डेमोक्रेटिक कंट्री, राइट. US इज़ अ लैंड वेयर बेसिकली आपका सारे ट्रैवलर्स रहते हैं और सारे आपके फॉरेन कंट्रीज़ के सब कोई रहते हैं. तो अपॉर्चुनिटी था, गए, बहुत अच्छा किया, वापस आके होटल मैनेजमेंट कंप्लीट किया. कंप्लीट करने के बाद फिर से मैं US गया, फिर से मुझे अपॉर्चुनिटी मिली. तब मैं एज अ फूड एंड बेवरेज एसोसिएट गया. अटलांटा में एक रिजॉर्ट है, शातो इलान वाइनरी एंड रिजॉर्ट. बहुत बड़ा रिजॉर्ट है. इट्स लाइक अ ह्यूज रिजॉर्ट जिसमें 8 रेस्टोरेंट्स थे. तो वहाँ पे मुझे काम करने का मौका मिला डिफरेंट रेस्टोरेंट्स में एज अ सर्वर, एज अ बारटेंडर. स्टार्टेड माई जर्नी एज अ सर्वर, एज अ बारटेंडर. देन स्लोली एंड इवेंचुअली वहाँ मेरे सीनियर्स थे जो मुझे गाइड करते थे, जिनके थ्रू मुझे प्रमोशन मिला. आई स्टार्टेड वर्किंग एज अ सुपरवाइज़र. वहाँ का बेवरेज मैंने चालू किया. वहाँ की वाइनरी का सारा बेवरेज मैंने मैनेज करना चालू किया. तो इवेंचुअली दैट्स हाउ करियर जो है आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगा, बेवरेज मैनेजर से सुपरवाइज़र. And then, fortunately, after working for 18 months at Chateau Elan, since I had my seniors, they helped me with my visa and everything. Then I moved to another property, which is owned by Marriott. It's a luxury property called St. Regis. So that was one of my best career move when I moved to the city in Atlanta for working for St. Regis.
as a food and beverage supervisor. And then after 6 months, I was promoted as an assistant F&B manager. But the journey which I had at St. Regis for 1 year, it completely changed my life. Started as a server, then a bartender, then a supervisor, then a assistant manager. And then St. Regis, basically I grew up as a leader. Because I met a lot of leaders over there. I worked with great general manager, an amazing F&B director, and an amazing F&B manager who was my colleague. He was from IHM as well, from IHM Ahmedabad. His name is Junaid Abbasi. So he was also a very great support. Always guided me with things like how should I do, what I shouldn't do. I hosted some of the big parties over there. I hosted some of the big celebrities over there, some of the big Hollywood celebrities. If I am sure one must have heard about Dwayne Johnson, So I hosted them, and then Nick Jonas, Priyanka Chopra. I hosted all of them over there. So it was like a great feeling, and that's how I grew up in my career. After meeting certain people, after knowing certain people, after meeting certain leaders, and that's how my career has been going so far. And then that's how I moved from there to sister property of St. Regis, which was St. Regis, Washington, D.C. as an operational food and beverage manager. That was another big career move because when I moved there, there was no one I knew. Like at least अटलांटा वाले में तो जानते थे ना, वहाँ तो किसी को मैं जानता ही नहीं था, वहाँ मेरे कोई दोस्त नहीं थे, वहाँ तो सिर्फ एक ही चीज़ था, काम करना है खाली. But I enjoyed because the people I worked over there, they were very supportive. पर एक हॉस्पिटैलिटी का एक नया रूप देखा मैंने डीसी में. जैसे अटलांटा में एक रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं, होटल में काम कर रहे हैं, स्टाफ नॉर्मल है, यू मैनेज स्टाफ, राइट. बट वॉशिंगटन डीसी में एक अलग चेंज मैंने क्या देखा पता आपको, स्टाफ के लेके रिलेटेड. अगर आप लोग ने सुना है कि नहीं पता नहीं, यूनियन होता है, समझेंगे नहीं. तो वॉशिंगटन डीसी में खास करके हर होटल्स में यूनियन है स्टाफ का लेके. तो आपको जो है ना स्टाफ को बहुत अच्छे से समझने को और उसको मैनेज करने को और अच्छे से सीखने को मिलेगा, क्योंकि उनकी एक खुद की बुक है that what works they can do, what works they cannot do. Like every staff they have been assigned job. Like for example, I'll give you an example. एक सर्वर है मान लो, अब सर्वर का काम है सर्व करना, ठीक है, उसका काम नहीं है वो क्लीन करना. तो वो उनके बुक में लिखा हुआ है, यूनियन बुक में, जो यही करेंगे वो, उससे ज़्यादा हम उनको बोल नहीं सकते. अब वो मेरी उनसे एक रिलेशन है अगर, तो हम वो मेरे लिए कर देगा. तो ये सब हार्ड टाइम्स है, जब आप नए जाते हो कहीं, ये आपको डिफ़िकल्ट टाइम्स होता है स्टाफ को मैनेज करना, उनका ओवर टाइम, एवरीथिंग, समझे कि नहीं, रिलेटेड टू एवरीथिंग अबाउट स्टाफ. सो दैट वाज अ पार्ट ऑफ अ लर्निंग एंड आई एंजॉयड. I learned a lot because I managed some of the very difficult people over there. People from different country, people with different language, I was dominated as well at times, because ये क्या करेगा, ये तो बच्चा है हमारे सामने. Because when I was working in St. Regis, Washington, D.C., I have people who have been working there for entire life. They have experience there for 50 years. Banquet में काम कर रहे हैं 50 साल से. They age like 70, 75 years. And I was like 25, 26. So they were like, बहुत छोटे हो. But what I used to do now, basically, it is not like I never used to be a bossy leader. I'm like, I understand I'm like too young. I used to give them respect. Basically, मोहब्बत से काम कराने से तो कोई भी कुछ कर देता है, तो वही मोहब्बत से काम करवा लेते थे. तो ये सारा एक्सपीरियंस रहा फ़िलहाल के लिए. फिर उसके बाद जर्नी तो आगे तुमको पता ही है, मैं इंडिया मूव हो गया, रेस्टोरेंट खोल लिया. अभी मेरे 2 रेस्टोरेंट्स हैं. इट्स बीन 2 years सोशल हाइडआउट का, और नया वाला रेस्टोरेंट जो मैंने खोला है वो लालू की लिट्टी, एक बिहारी कुजीन है. सो इट्स बीन ग्रेट सो फार, आई एम लविंग इट. खालिक, आपकी जो यूएस की जर्नी थी वो काफ़ी इंटरेस्टिंग और इंस्पायरिंग है. तो आपने आपने ये कब सोचा कि आपको अब बिज़नेस में आना चाहिए और आपको रेस्टोरेंट्स ओपन करना चाहिए? तो ये आइडिया आपके पास कब आया? इसके बारे में अगर आप हमारे व्यूअर्स को बता पाएँ. बिजनेस करने का कोई प्लान नहीं, प्लान था तो जॉब ही करने का, क्योंकि जब जॉब कर रहे थे ना मेरिट के लिए, खास करके सेंट रिजिस रिजॉर्ट के लिए, एक नशा है, समझे कि नहीं. वहाँ उसका एक वर्क कल्चर है, इतना अच्छा है ना, वर्क एथिक्स बहुत अच्छा है, वर्क कल्चर बहुत अच्छा, क्योंकि आप एक प्रॉपर्टी से कल्चरलीज वाइज जो है ना आप जुड़ जाते हैं, क्योंकि उनका इतना सारा कल्चर होता था ना. जैसे फॉर एग्जांपल सेंट रिजिस में ना आपका कुछ ऐसा चीज़ है जो डेली बेसिस में होता था, हाई टी, समझे कि नहीं, उसके पीछे एक हिस्ट्री है. आफ्टरनून टी जो है उसके पीछे एक हिस्ट्री है. तो वो हिस्ट्री सुन के एक गेस्ट को बोलने में इतना मज़ा आता है जो हम क्या बताएं. आई विल शेयर द स्टोरी विथ यू एज वेल.
लाइक आफ्टरनून टी का एक बहुत बड़ा स्टोरी है. तो द फाउंडर ऑफ सेंट रिजेस, जॉन जेकब एस्टर द फोर्थ, he was living in New York. So his wife and his wife, what she did one day, she invited 400 millions of New York at her house, and she in the afternoon, and she threw an afternoon party. That's how the afternoon tea party was started, and that thing has been added at St. Regis ऑन अ डेली बेसिस. एवरी डे आप कोई भी सेंट रिजेस में जाइएगा ना, आपको दिन में 12 से लेके 5 बजे तक आफ्टरनून टी का ऑप्शन रहता है, जहाँ लोग जो है बेसिकली दे ट्राई टू ड्रेस अप वेरी नाइसली लाइक दे यूज टू बी इन द पास्ट, यू नो, दे वांट टू लुक गुड. द अदर थिंग इज सेबरिंग. आपने सुना होगा शायद, where we open a bottle of champagne with a knife, you know. So that was the most happening thing for me, and I used to do every day. Every day in the evening, 6 o'clock, I used to be in the lobby, and I used to tell the story of the savoring to all the people, that how it was started. Like it is so inspiring. I enjoyed telling people, and people loved it. And then I used to savor a bottle of champagne. Like, the story is basically, John Jacob Astor the Fourth, he was traveling. It is said that he was a very big fan of Napoleon, So Napoleon and his army was traveling from the Champagne region of France. So whenever they used to win any like war, earlier that time there was a lot of war going on. Whenever they used to win war, they used to open bottle of champagne while sitting on the horse. So on the horse, they used to have a knife in their hand and a bottle of champagne. So that's how they used to savor a bottle of champagne. And once it is said, champagne is something one deserve it in a victory and one need it in a defeat, So that is how, savoring was started. And then our founder, John Jacob Astor the Fourth, he was just a big fan of Napoleon. And then he enjoyed that. So that was a culture which was brought into St. Regis. So I enjoyed it. I was connected to it. So I was loving it. I was working over there. I was meeting some of the great leaders over there. The vice president of, whether it's a vice president of the Marriott, or whether the former late president of Marriott, the CEO, if you know, Arnie Sorensen, I had opportunity to meet with him as well. And such a down-to-earth person, Like you learn from them how to be a leader. Like as one day I was just standing in the lobby. He just walked in and he just he was like, "Hi, I'm Arnie Sorensen." I was like, wow. That was the biggest moment, one of the best moment of my life, which I'm sharing right now. Because I'm meeting one of the best leader of the world, in the hospitality sector. He's the king. He was the king. He's still the king. He will always be remembered, So that is something which has inspired me always. I wanted to be in the industry. I wanted to grow in the industry. I wanted to be like a president, vice president of a corporate, like Sandeep Walia or Marcus Pennington. I had an opportunity to go to the Marriott headquarters over there in Maryland, where I did the savoring ceremony, because I was very expert at that, So I always wanted to be in the industry, I always but fortunately, like there was a time when we all were struggling, COVID, if you know, COVID-19 pandemic. So the hospitality industry in US was affected very badly. A lot of people got laid off. A lot of hotels got closed. I was fortunate to have my job for a couple of months, but then at one point, I was also laid off from St. Regis. Well, I had a last interview at the Trump Hotel DC, where I was appointed as a general manager of the bar, which is the bar which has a $500 million stock of alcohol. But fortunately, the COVID arrived. So after a couple of months, I was laid off, and then I came back to India. I got married here, and then I was like, what to do in India? Because I was working abroad. I never worked in India. I just worked for a couple of months in India, So I did not have much experience. So I thought of opening a restaurant. Somehow it clicked my mind. My wife was very supportive. She was like, yes, you should do it. And then that is one of the reasons I jumped into this entrepreneurship journey. And I opened my first restaurant in 2021, in 15th October. That was Social Hideout. And it was an experiment. I was not expecting that it will turn out so good. And it turned out amazingly good. बिल्कुल अग्री करते हैं आपसे, और एक एक्सपेरिमेंट से सुपरहिट हो जाना, और ये बहुत ही अच्छी बात है.
और आप सोशल हाइडआउट और लालू की लिट्टी जो आपके दो रेस्टोरेंट्स हैं, इसके बारे में अगर आप थोड़ा और बताएं हमारे व्यूअर्स को। So I'll start with Social Hideout. That is one of the first restaurant cafe which I own. So I co-own that restaurant. I have a business partner as well who's been very very supportive throughout my journey. Because Social Hideout जब मैंने start किया था, it was a dream. You know, it was a dream. It was in my mind. We did not hire any interior designer, any expert. You know, it was just a thought which I had it in my mind. The vibe which I felt in one of the restaurants in US, and I wanted to create something like that. And my co-business partner, he was very supportive and he helped me to achieve that, you know. And today, like, I can say that it is one of the most Instagrammable cafes in Calcutta. So in the beginning, it was a very difficult journey, you know, when I started my Social Hideout, because when we were building up, you know, we had a glass house. If you check, you know, it is very difficult to do that without experts, you know. And when you are coming back to the country after 6 years and you hardly know anyone, you know, very few of them. So it was difficult in the beginning, but somehow we managed to do that. And all the other decorative item where you see over there, like decoration you see over there, like the floral theme and everything, it was all conceptualized in our mind. It was my idea and it was supported by my co-partner, you know, my co-business partner. And that's how Social Hideout began. I was expecting just to do an experiment. I was expecting a small crowd. So I was like, yeah, let's see how it goes. And then I'll tell you what happened. So after opening my Social Hideout, after 15 days, I got married. Okay. And I was supposed to stay at my parents-in-law house for a couple of days. And I get a call, sir, बहुत भीड़ है सर, कैसे मैनेज करें बोलिए. तो स्टाफ उस टाइम बहुत कम था, ठीक है. तो I was like, I have to go. I cannot stay, you know. I'll come back later. So I came back. That was the memorable moment of my life, you know. I came back and then I was completely hands-on. And usually शादी के बाद लोग क्या करते हैं, हनीमून पे जाते हैं, घूमने जाते हैं. But me and my wife, वो season पूरा we were working in the restaurant. She also came back with me and she was full hands-on restaurant. She was working with me throughout the time, because from morning to night we used to be in the restaurant for the first 3 months, because we got a great response, you know. People were loving it. The ambience was something very unique. We were like, what I learned from St. Regis to be a trendsetter, that is what I bought it at Social Hideout. I set up a trend of floral theme restaurant, which was not there before in Calcutta. And that's how the journey was, you know. So after having for 18 months, it's been like 2 years now for Social Hideout. Just this year, we opened a new restaurant called Lalu Litti. That was an idea from my co-business partner. He came to me one day and he was like, I want to do something like Champaran mutton, you know. I'm like, okay, I'm not getting it. Give me some time. Okay. So I was like, let me think about it. So I started thinking about it. I started researching about it, what it is. And then very interesting facts used to come, you know, like about the Champaran mutton, that the way it is being cooked, you know, it is cooked in a clay pot, which is a very old method of cooking. And then about other dishes of Bihar, I'm like, of course, man, there is so many things in India. Like there is South Indian food is booming, Maharashtrian food is booming, Bengali food is booming. Why not Bihari food? I should be the first one. I'll take this to the next level. I am on a mission to globalize the Bihari cuisine. So that's how the Lalu Ki Litti was born, you know. And then I was thinking about that business all night and I was like, what should be the name? I don't want to use the name something Champaran, because there's so many restaurants in India which just refer as Champaran Meat House, Champaran this, Champaran that. I don't want to use that. I'm like, has to be something unique, something catchy. So I was researching and then I went through an article of Times of India where it says, sadly, Bihar is known for Lalu and Litti. So it immediately clicked on my mind, I'll name it as Lalu Ki Litti. Let's make it Lalu Ki Litti, let's make it famous. So that's how the journey started for Lalu Ki Litti as well. And it's been great so far. The response is good, people are loving it and I'm loving it as well. अमेजिंग. और देखिए, आपने जॉब भी किया है, आप अभी जो 2 रेस्टोरेंट्स है इसके ओनर भी हैं. तो आप जो है जितने भी एस्पायरिंग जो स्टूडेंट्स हैं, इनको आप क्या सजेशन देंगे? आपको लगता है कि हर कोई एंटरप्रेन्योर बन सकता है? होटल मैनेजमेंट जो कर रहे हैं बंदे, उनके लिए, लोग जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए मेरा ये एडवाइस रहेगा, जो अभी आज के डेट में ना इंडिया जो है पूरा एकदम जो है एंटरप्रेन्योर से भर रहा है, समझे. और लोगों को, हर किसी को जो है ना अपना बिजनेस करना है. तो
ऐसा कुछ नहीं है जो आप होटल मैनेजमेंट करने के बाद आप बिजनेस नहीं कर सकते। आप होटल मैनेजमेंट कर रहे हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं, आप 8 लाख 10 लाख रुपए आप खर्चा कर रहे हैं, ठीक है, तो आप एक छोटा बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। एंटरप्रेन्योर, एज एन एंटरप्रेन्योर होटल मैनेजमेंट में आज के डेट में अपनी इंडस्ट्री में सबसे बड़ा जो इंडस्ट्री बूम हुआ क्लाउड किचन, जो आपका कोविड के बाद से जो बूम हुआ है। तो अगर आपके पास अच्छा आइडिया है, आपके पास अच्छा आप एक अच्छा क्विजीन आप उठाइए, समझे कि नहीं, जो आपको लगता है बेस्ट रहेगा। ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, आप छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट करिए, 3-4 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करिए, किचन सेट करिए, क्लाउड किचन। आप मेक श्योर आपका ब्रांड बहुत स्ट्रॉन्ग रहे, आपका ब्रांड का नाम आप सोचिए बहुत अच्छे से, समझे, तो उसको प्रमोशन करिए बहुत अच्छे से, अपना पैकेजिंग वैकेजिंग सब अच्छे से रखिए, और आप अपना क्वालिटी में एकदम कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए। क्लाउड किचन है तो एकदम क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़। तो आप अगर मेहनत करिएगा तो आपका बिजनेस ज़रूर बढ़ेगा। बाकी और भी आपके पास करियर ऑप्शन है, जैसे कि आप होटल मैनेजमेंट करिएगा तो उसके बाद इंटर्नशिप का ऑप्शन रहता है आपका, तो वो आई विल सजेस्ट एक बार आप लोग बाहर ज़रूर जाना चाहिए। यूएस हो, यूरोप हो, कोई भी कंट्री हो, पर एक बार आप जाइए, एटलीस्ट जाके आप बिना पेरेंट्स के वहाँ रहिएगा, बिना कोई फ्रेंड्स के रहिएगा, अपने आप पे रहिए, तो आप वहाँ से दुनियादारी सीखिएगा, आप सब कुछ सीखिएगा, आपको सब कुछ सीखने मिलेगा। जो अप्स एंड डाउन्स लाइफ में आते हैं आप सब कुछ सीखने को मिलेगा आपको, तो वो आपको हेल्प करेगा आपके करियर में, आपका एंटरप्रेन्योरशिप में। अगर आप करना चाहते हैं आगे, सिर्फ जॉब ही नहीं होता सब कुछ। हाँ, हर कोई एंटरप्रेन्योरशिप नहीं कर सकता हो या हर कोई जॉब नहीं कर सकता है, बट अगर आपके अंदर आपको लगता है स्किल्स है, अगर लगता है आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ जाता है, एक टाइम को नहीं भी होता है, कभी आ जाता है फ्यूचर में, मे बी इंटर्नशिप करने के बाद आप जब एक अपने आप अकेले रहने लगते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो आपके अंदर वो हिम्मत बढ़ जाती है। तो आपको लगता है आपके अंदर है वो हिम्मत, वो एक्स फैक्टर है, तो आप कोई भी एक बिज़नेस कर सकते हैं फूड इंडस्ट्री में, क्योंकि आप एक्सपर्ट हैं, आपके पास पैसा अच्छा है, तो आप रेस्टोरेंट्स भी कर सकते हैं। इतने थीम बेस्ड रेस्टोरेंट चल रहे हैं आज के डेट में। आप ट्रेंड को फॉलो करिए, आप सोशल मीडिया को फॉलो करिए, आप, इट इज़ अ डिजिटल वर्ल्ड, कीप योर सेल्फ अपडेटेड। लाइक अभी आप देखिए ना, नया एक ऐप लॉन्च हुआ थ्रेड्स, तो यू हैव टू बी अपडेटेड एवरीवेयर। बिल्कुल सही बात है। और आपने अभी बताया थीम कैफ़े के बारे में। मैं बताऊं, आपकी जो रेस्टोरेंट है वो बहुत ही खूबसूरत है, और आपको क्या लगता है इंस्टाग्राम में फ़ोटो डालने लायक है? तो आपको क्या लगता है कि इंस्टाग्राम वर्दी होना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या फिर क्वालिटी फूड सर्व करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? क्वालिटी ऑफ फूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ लॉन्ग टर्म ऑफ अ रेस्टोरेंट। कोई भी रेस्टोरेंट बिजनेस में आप जाइएगा, Instagram worthy तो is fine, of course it's a trend, you have to follow that, it's all about Instagram, but food quality is the top priority, because अगर आपका quality of food नहीं रहेगा तो आप कोई भी आपका कस्टमर वापस नहीं आएगा आपके पास, it will be a one time visit। अगर आपको अपने कस्टमर्स बनाने हैं तो आपको मेक श्योर आपका खाना हमेशा टॉप नॉच रहे, क्वालिटी में एकदम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, बेस्ट ऑफ बेस्ट आप अपना मटेरियल्स दीजिए, उसमें बेस्ट ऑफ बेस्ट आप यूज़ करिए सामान खाना में, आप अच्छे अच्छे शेफ़ रखिए। अगर शेफ़ अच्छे नहीं, आप उनको ट्रेन करिए, बी अ गुड लीडर, ट्रेन देम, इंस्पायर देम एवरी डे, मोटिवेट देम, एंड देन टेल देम, शो देम द पाथ दैट हाउ कैन दे बी बेटर, तो ये सजेशन रहेगा मेरा, जो अपना फूड क्वालिटी हमेशा अच्छा रखें, और साथ में आप अपना ऑफकोर्स थीम रखिए रेस्टोरेंट में। आज के डेट में थीम पे ही रेस्टोरेंट चलता है, रेस्टोरेंट्स बहुत सारे हैं कलकत्ता में, क्या पूरे इंडिया में रेस्टोरेंट एवरी डे नया रेस्टोरेंट खुलता है, ठीक है, पर सस्टेन वही करता है जिसका क्वालिटी अच्छा है, जिसका एक अच्छा एम्बियंस है, एक थीम बेस्ड रेस्टोरेंट है, सर्विस अच्छा है, सर्विस शुड बी वेरी नाइस, जो आपके लोग जो वहाँ काम कर रहे हैं, आपके द पीपल हु वर्क फॉर यू, they should connect with all your guests. It's very important to connect with people, because when any guests come, because they can be in any mood, it's like we connect with them, and if we make them happy, then they feel very comfortable, they come back. That is what I have learned in my career. They come back to you, they like, let's go to social hideout, I'm not feeling good, let's go to oh, I'm happy, let's go to social hideout, oh, it's my birthday, let's go to social hideout. It's all about social hideout then. This is what it is. एब्सोल्युटली। और मैं आ रहा हूँ बहुत जल्दी अपनी पूरी टीम के साथ सोशल हाइडआउट, और मुझको पता चला कि आप जो थर्ड आपका जो रेस्टोरेंट है वो आप पटाया थाईलैंड में आप खोल रहे हैं, तो आप अगर उसके बारे में कुछ हमारे व्यूअर्स को बताएं। I'm opening a new restaurant, like relaunching it very soon. पटाया में आपका वॉकिंग स्ट्रीट, इट्स अ वर्ल्ड फेमस वॉकिंग स्ट्रीट, जस्ट वहाँ पर एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोल रहे हैं। It's called, the name, I'm revealing the name today finally, it's called Al-Faham, okay. It's a basically Arabic kind of a cafeteria.
where we will be serving Arabic food, Indian food, and some fast food as well. So I'm doing a business with a partner as well. He stays over there. So he will be looking after the daily operations over there, and I'll be managing it, and I'll be traveling throughout the time. So we'll be launching very soon. मैं सारे व्यूअर्स को यही बोलूँगा, जो आप लोग अगर आते हैं थाईलैंड तो आपको अच्छा खाना चाहिए, हेल्दी खाना चाहिए, वॉकिंग स्ट्रीट आइए. वॉकिंग स्ट्रीट के बाद आप किसी से पूछिए अल-फहाम कहाँ है. इट्स नियर वीसी होटल. So small little cafe, we are available online as well, and we're looking forward for a great success. एब्सोल्युटली. खालिक, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. आपको इसी तरह से सक्सेस मिलता रहे, आप और कामयाबी को आप छुएं, और हमारी शो पे आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका. Thank you for having me. It was a pleasure to be here.